Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we shall discuss suspension and its properties. Before this we have discussed solution, aqueous solution, non-aqueous solution, along with the properties of solution. Today, what is suspension? It is not the suspension that we discuss in English. In chemistry, a suspension is a heterogeneous mixture. We have already discussed types of mixtures, in which we have two types of mixtures. One is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. Suspension is also a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve. In solution, we observe that the solute particles completely dissolves in solvent, but in case of suspension, the solute particles do not dissolve completely in the solvent. For example, if we will take a chalk powder of chalk and we will dissolve that in water, you will observe that the particles of the chalk will not completely dissolve in water. What will happen there? They will always remain suspended throughout the bulk of the medium. If we will dissolve powder of chalk, that is lime, in water, what will happen? The particles of chalk will not completely dissolve in water, they will remain suspended. वो पानी में completely हल नहीं हो जाएंगे, वो suspend रहेंगे. अगर ऐसी सिचुएशन होगी, हमारे पास एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होंगे, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन. सस्पेंशन की मिसाल हम ले लेंगे, वो लाइम वाटर है हमारे पास, जैसे कि हमने चाक पानी में डिसॉल्व किया. इस तरह ब्लीचिंग पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन वाटर, वी एड ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर. ब्लीचिंग पाउडर that does not dissolve in water completely, that remains always suspended in water. It is another example of suspension. Paint. When we paint our rooms or any building, that is also suspension. Another example is muddy water. If you will bring some mud and you will try to dissolve that in water, you will see that that mud does not dissolve completely in water. What happens? The particles of mud will always remain suspended in water. Now, if we will settle that solution, for example, we have a suspension of chalk powder in water. If you will keep that undisturbed for a period of time, let us say for 10 minutes, what will happen? The particles will settle down at the bottom. They will settle down at the bottom. We will see the water will remain above the particles of this chalk powder. So, in case of suspension, the particles do not dissolve completely. They remain suspended. अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे वो हमें कोई सिरप देता है, तो इस पे अगर लिखा होगा सस्पेंशन, तो वहां पे बोतल के नीचे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज. शेक वेल बिफोर यूज क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये सस्पेंशन है, इसको हमें शेक करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल अगर ये हमने अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम रखा है, तो इसमें पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व, वो दे हैव सेटल्ड एट द बॉटम, तो इसलिए इसको शेक करना पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल जो है ये सारे मीडियम में
डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सारे मीडियम में ये सस्पेंड हो जाएंगे, फिर वो दवाई ले लेंगे तो सस्पेंशन अपना काम अकॉर्डिंगली करेगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, पहले ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये कंप्लीटली हिट्रोजीनियस है। इसमें हम पार्टिकल्स अलग देख सकते हैं, तो सॉल्वेंट अलग देख सकते हैं, सॉलिड अलग देख सकते हैं, सॉल्वेंट अलग देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई, हम अपनी आंख से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं देख सकते हैं। तीसरा ये है सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जब हम इसी मिक्सचर को, इस सस्पेंशन को फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स और 20 मिनट्स अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो इसके पार्टिकल जो होते हैं दे सेटल एट द बॉटम, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी ये है, दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। अगर हमारे पास ये एक सस्पेंशन है, इसमें हम लाइट डाल देंगे तो ये इस लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, यानी वी कैन ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द लाइट, हम लाइट की पाथ को यहाँ देख सकते हैं, यानी इस मीडियम में। जो कि हमने सोल्यूशन में देखा, वहां पे जब लाइट फ्लैश करते थे तो हम इस पाथ ऑफ द लाइट को नहीं देख सकते थे। लास्ट प्रॉपर्टी ये है सस्पेंशन की, सस्पेंशन आर इधर ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, या तो ये ओपेक होते हैं, यानी इसमें जब हम लाइट डालते हैं वो तो या तो इसके बीच में से पास नहीं होते हैं, या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, या थोड़ी पास हो जाती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है ओपेक सब्सटेंस एंड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। ओपेक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है, ट्रांसल्यूसेंट वो कहलाते हैं जिनमें थोड़ी लाइट पास हो जाती है। तो ये सस्पेंशन या तो ओपेक हो सकते हैं या ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। थैंक यू। We will discuss colloidal solution in next time, next period इंशाल्लाह। अब हम दूसरे वीडियो में हम इस पे बात करेंगे colloidal solution में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।